जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की रणनीति आखिरकार क्या है? क्या वहां पर डंडे का जोर चलेगा या फिर मरहम लगाने की कोशिश की जाएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका आज तक इंडिया टुडे के इस राउंड टेबल में। तमाम चर्चा होती है मोदी सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कश्मीर में वर्तमान हालात मोदी सरकार की 3 साल की सबसे बड़ी नाकामी? अब इसका उत्तर तो बिल्कुल उलट है कि ये 67 साल के पापों का प्रायश्चित है और अभी 3 साल भी 26 मई को होंगे और आप देखेंगे और आप मेरे शब्द नोट कर लीजिए कि बहुत जल्द ये अध्याय बंद होगा। दिस चैप्टर विल कम टू अ क्लोज। हाउ? कैसे? यू विल सी एज द थिंग्स अनफोल्ड बिकॉज दैट इज नॉट फॉर मी टू स्पेल आउट पब्लिकली। चैप्टर यानी क्या कह रहे हैं? कौन सा चैप्टर? द चैप्टर ऑफ डिस्टर्बेंस व्हिच यू आर रेफरिंग टू। आप कह रहे हैं कि डिस्टर्बेंस ओवरनाइट बंद हो जाएंगे। मैंने ओवरनाइट तो शब्द इस्तेमाल नहीं किया, आपने किया। चैप्टर बंद हो जाएगा। चैप्टर बंद किया लेकिन ओवरनाइट नहीं बोला। नो टू वर्ड्स मीन द सेम। बताइए टाइम फ्रेम। I am saying sooner than later. I'll not be able to tell you fine time frame, nor am I supposed to share the security details and sensitive details. But sure, be sure, this will be a decisive, and the Modi government has a decisive policy. We follow a policy with clarity, with conviction, with courage of conviction, and also with consistency. नहीं, अगर इसका एक पहलू ले, हुर्रियत के साथ आप बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे? आपका एजेंडा ऑफ अलायंस कुछ कहता है और हमारा इंडिया टुडे और आज तक के स्टिंग में एक अलग बात निकल कर आई है कि वो पाकिस्तान से पैसे लेकर ऑपरेट करते हैं। एजेंडा ऑफ अलायंस कहता है उनसे भी इंगेज करेंगे। नहीं, आपने 2-3 प्रश्न कर दिए। एक इस प्रश्न में 2-3 भाग हैं। पहली बात तो ये है, एजेंडा ऑफ अलायंस कहता है कि स्टेक होल्डर से बात करनी। स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टेक होल्डर्स वैसे तो देखा जाए हम सब भी हैं। वी आर इक्वल स्टेक होल्डर्स एज सिटीजन ऑफ इंडिया एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न। यदि आप स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के नागरिकों की बात करते हैं तो कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग भी हैं, सिख भी हैं, लद्दाख और जम्मू के लोग भी हैं। कश्मीर घाटी का बहुत बड़ा समुदाय 65% से अधिक युवा है, वो है। अब somehow these 2-3 names get fixed in your mind, तो वही बात चलती है कि वो स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर्स यदि आप व्यापक तौर पर देखें तो एंगेजमेंट चल ही रही है। अभी हाल ही में 700 लगभग सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज थी, जिसके लिए 68,000 युवक और युवतियां बाहर निकल करके आए हैं। सो certainly this is a youth engagement which is happening. They are all stakeholders. हुर्रियत नहीं है? हुर्रियत to anybody, all of us, but why only हुर्रियत? Why this gets fixed up with 2-3 names? और जब भी ये पूछा जाता है कि बातचीत होगी ना होगी तो माफ़ कीजिएगा, वो बायस एक मन में एक घुस गया है बात के साथ, वो 2-3 नामों को लेकर के सवाल होता है। Why didn't you start off from Kashmiri Pandits? Why didn't you start off from Jammu? Why didn't you start off from Ladakh? Why didn't you start off from the youth who comprise 65% population of Kashmir? तो आप हमें बताइए, So why you are fixed? आपके हिसाब से मोदी सरकार की कश्मीर को लेके रणनीति है क्या? व्हाट्स द ग्रैंड स्ट्रेटजी? देखिए, सबसे पहले तो ये बात निकाल दीजिए कि कश्मीर को लेकर के रणनीति बनानी है कि कश्मीर कुछ अलग से एक मसला है, जैसे आप भी कह रहे हैं और बहुत से और लोग कहते हैं। जम्मू कश्मीर इज as much a state of India or Indian Union as any other state. तो पहली बात तो ये कि कोई इशू ही नहीं है। यदि कोई इशू है भी, which has been reiterated time and again and is also now a part of the unanimously passed resolution of Parliament, which was not during our government in 1994, कि यदि है भी तो मात्र इतना कि किस प्रकार जो पाकिस्तान के नाजायज़ कब्जे वाला हिस्सा है पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर या गिलगित बाल्टिस्तान, उसे पुनः वहाँ से मुक्त करा करके जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया जाए और जम्मू कश्मीर को उसी स्वरूप में बहाल कर दिया जाए जिस स्वरूप में महाराजा हरि सिंह सौंप करके गए थे। वो आपकी रणनीति है? वो आपका अल्टीमेट गोल है? कब तक कर पाएंगे? ये हमारा ही नहीं है, ये सारे देश का है, ये सारी संसद का है। द यूनानिमस रेजोल्यूशन पास्ड इन 1994
was passed and accepted as much by any other political party as by the BJP. लेकिन कहीं ना कहीं पिछली सरकार को देखिए, कम से कम 1 या 2 आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज थे। आप उन्हें स्वीकारे या नहीं ये बात अलग है। जैसे श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस, कुछ ना कुछ मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा जिससे लगा कि कम से कम एक पहल तो शुरू हुई है। अब देखा गया है कि खासकर कि पिछले 12 महीनों में एक डीप फ्रीज हो गया है कश्मीर में, और सरकार भी कुछ नहीं करना चाहती है, महबूबा भी कुछ करना नहीं चाहती है, और पाकिस्तान अपनी शरारतें करता जा रहा है। तो एक स्टेटस को सिचुएशन आ गई है जहां हर समर में इसी तरह के डिस्टरबेंस होने की आशंका है। हो चुका। वेरी मिसप्लेस्ड एनालॉजी। आपका मतलब एक और रास्ता खोल दिया जाए पाकिस्तान का तो मसला हल हो जाएगा, अगर है कोई तो। See, these are part of the ongoing processes. Now we are going to have a train to Bangladesh from Tripura. In any developing country, these things happen. You can't draw such a simplistic analogy. I am amazed. Having said that, let me also point out, जो उन सरकारों में हुआ उसका हशर आपने देख लिया आज। This is the baggage of what has happened in the last 67 years, more so in the Congress rule, beginning from 1947, which is now infamously recorded in the history as Nehruvian blunders. And I have been always saying this time and again that if only the then Prime Minister had allowed the then Home Minister Sardar Patel to handle Jammu and Kashmir in the same manner as he was handling the other states of Indian Union, the history of entire Indian subcontinent would have been different. सर, आप नेहरू को दोष दे रहे हैं, लेकिन वाजपेयी जी ने भी वो 4 फॉर्मूला जो था मुशर्रफ साहब के साथ, वो लगभग कहा जा रहा है तय किया था, जिसमें एक पार्ट था कि एलओसी जो है वो एक तरह से परमानेंट रहेगी दोनों देशों के बीच। कम से कम वाजपेयी जी ने वो बातचीत तो शुरू कर। उस विषय में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा बिकॉज दिस इज मोर ऑफ अ स्पेकुलेटिव ऑब्जर्वेशन। नहीं, आप नेहरू को दोष दे रहे हैं। मैं वाजपेयी की बात रहा हूँ। देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू सजेस्ट व्हाट यू आर सेइंग और एट्रीब्यूटिंग टू वाजपेयी, बट देयर इज एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड टू सजेस्ट व्हाट आई एम टॉकिंग एट्रीब्यूटिंग टू नेहरू, एंड डाउन फ्रॉम नेहरू up to what happened 87, the rigged elections, and it's so on and so forth. So what I'm trying to say is, और अगर आप ये ले लें कि जो हाल ही में हुआ है, अगर आप पिछले 20-25 वर्ष के आतंकवाद के इतिहास का गहराई से अध्ययन करें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पर ऐसे फेजेस आए हैं जब मिलिटेंसी बढ़ती है फिर कम होती है। दो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, एंड any responsible government, including ours, should not seek any alibi in that. I am not trying to do that. What I am trying to say that even if you go statistically, even in recent times, 2008 was worse. वहाँ के मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा जो कांग्रेस पार्टी के थे। 2010, 2012 दो सक्सेसिव हॉट समर्स नहीं होते थे, कभी भी 2 सक्सेसिव हॉट समर्स नहीं होते थे। पिछले साल कभी बुरहान वानी की इनकाउंटर के बाद हॉट समर थी, और कहा जा रहा है कि इस बार भी हॉट समर नहीं। वो तो कहा जा रहा है ना, अभी समर तो गुजरेगी। क्योंकि कुछ आंकड़े हैं जो कि इंडिया टुडे की मैगजीन में जो 3 साल का मोदी जी का परफॉर्मेंस एनालाइज किया गया, उसमें लिखा है कि 89% इंक्रीज इन टेरर इंसिडेंट्स, 82% सर्ज इन फेटल कैजुअलिटीज ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, एंड 31% राइज इन इन्फिल्ट्रेशन पिछले एक साल। नो, कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। Compared to previous years. So why don't you take the full 25 years or 28 years of militancy? I think that will be more enlightening. सर, अगर हम मोदी सरकार की ही बात करें, मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जो भी इस समय कश्मीर को लेकर के, जम्मू को कश्मीर को लेकर के जो हमारा रुख है उसमें एक क्लैरिटी है, और जिस प्रकार की कार्रवाई अभी हो रही है, भले ही सीमा पे हो रही है, भले ही सीमा के अंदर हो रही है, क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र का काफ़ी हिस्सा इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता है कि यदि आपका स्वागत है वहाँ आइए। लोग स्वयं ये कहते हैं कि जिस प्रकार की जवाबी कार्रवाई आज देखने को मिली है ऐसी वर्षों में देखने को नहीं मिली। और जहाँ तक आंतरिक है, यू आर योरसेल्फ विटनेस, योर चैनल इज अ विटनेस, द काइंड ऑफ action which has been initiated was never contemplated or initiated दो पहलू in the earlier governments. In fact, it should be the other round. Now the question mark should be on the earlier governments, why they allowed things to dither away in the manner they did, and even to the Hurriyat which you are referring to, why they were allowed to grow in the manner they did in the last 27 years. एक नहीं, दो नहीं, दक्षिण कश्मीर में 1-2 नहीं, 30 आतंकवादी एक साथ घूम रहे हैं हथियारों के साथ। ये केवल एक चीज दर्शाता है कि चाहे वो सेना हो, चाहे सीआरपीएफ या जेकेपी, तीनों की वहां पकड़
उस तरह की नहीं है कि 30 आतंकवादी घूम सकते हैं। ऐसा केवल 90 के दशक में हुआ था। पहली बात। दूसरी बात, नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी अभी भी आके हमारे सर काट के चले जाते हैं। सुषमा स्वराज जब विपक्ष की नेता थी सर, तो वो ये कहती थी कि एक सर के बदले 10 सर लाओ। अब ठीक है, आपकी गौरव जी चिंता बिल्कुल उचित है। केवल आप ही की नहीं, किसी भी देशभक्त नागरिक की यही चिंता होनी चाहिए। लेकिन ये जो 30 आतंकवादी घूम रहे हैं, यदि आपकी सूचना ठीक है तो बहुत ज़्यादा देर नहीं घूमेंगे, ये भी आप आश्वस्त नहीं, रहिए। सूचना क्या हो तो फोटो डाली सर, तस्वीरें हैं, आई एम नॉट चैलेंजिंग वीडियो। योर इन्फॉर्मेशन, आई डेयर नॉट, बट आई एम सेइंग दिस विल नॉट लास्ट लॉन्ग। नहीं, लेकिन इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटेजी यहां तक सीमित है कि हम ठोस कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान से बमबारी हुई, हम उसका जवाब देंगे। मिलिटेंट्स है, हम उनको मार गिराएंगे। लेकिन बगैर कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के आप कश्मीर के लोगों के दिलों को आप जीत नहीं सकते। और डर यह है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास का जो अभाव है जम्मू और कश्मीर के बीच, कश्मीर और भारत के बीच, वो बढ़ रहा है। रेस्ट ऑफ इंडिया और कश्मीर के बीच, जम्मू और कश्मीर के बीच जो ट्रस्ट का डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं है। तो आपने महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस कर लिया, उसके बाद क्या, किस तरह से वो अलायंस चलेगा? अब आपने 3-4 प्रश्न किए हैं। नहीं, मैंने एक ही सवाल किया। नहीं, आप political महबूबा strategy। तक पहुंचे, आतंकवाद से शुरू होके। आप मुझे बताइए, और 125 करोड़ के इस देश में सर्वे कर लीजिए, क्या आतंकवाद के साथ सख्ती के साथ नहीं निपटना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की जरूरत है। मैं नहीं कहता, इंदिरा जी कहती थी, यू कैन नॉट शेक हैंड्स विद अ क्लेंच्ड फिस्ट। अभी यहाँ उठ करके मैं आपको पत्थर मारना शुरू कर दूं तो माफ कीजिएगा, ये राउंड टेबल अभी बंद हो जाएगा। यू हैव टू हैव अ semblance of normalcy or a compatible environment for any initiative, which is a peacetime initiative. Having said that, I do not disagree that all these things happen at different levels and they must happen simultaneously. But please don't assume that they are not happening simply because some of us who come to the channel are bound not to share every detail because these are sensitive security matters. That's about all. But certainly, there is zero tolerance towards terrorism, more so when there is enough evidence, including that from your channel, that this is being sponsored, perpetrated, perpetuated, funded by hostile outside powers. आपने डॉक्टर साहब हुर्रियत ऑपरेशन जो था हमारा, हुर्रियत ट्रूथ टेप्स देखा, आपके हिसाब से हुर्रियत को लेकर भारत और दिल्ली में जो नजर रही है वो कैसे बदलती है इस इन्वेस्टिगेशन? निश्चय ही, I have to compliment you, though I won't give you exclusive credit, क्षमा कीजिए, because there have been evidences even in the past, evidences even in the earlier governments why they did not act appropriately. That is for them to answer in another round table. As I said, we've been there hardly for 3 years. Your evidence or your investigation has certainly authenticated that sequence of the events, and therefore to that extent you deserve to be complimented. लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है, जिसका सबको सारा पूरा, जिसका ब्यौरा पूरी तरह सार्वजनिक तौर पर भी शायद नहीं लाया जाता और लाना भी नहीं चाहिए, ये निर्णायक कार्रवाई है। And that's why I said, now the onus would be on the earlier governments to answer. Why, in spite of evidence, they did being not? so soft on characters like Sayyid Ali Shah Gilani? Why should he Absolutely. be in house arrest? Absolutely. Where he's getting doodh badam pani I agree instead with of being in a jail? I absolutely agree with you. And I think the major part of this question has to be addressed who have been at the helm of affairs for the last 27 years. सर, लेकिन अब 3 तो साल आप से आप तो सत्ता 3 में साल है। के हैं, तो अभी 3 साल में आपने देख लिया नतीजा क्या हो रहा है। पहले भी नहीं बादाम सर, खा रहे थे घर में बैठ के, अभी भी बादाम खा रहे हैं। आपने ही तो अपनी चैनल में दिखाया कि बादाम नहीं खा रहे, आपके फोटोग्राफर से और उससे झगड़ा कर रहे हैं। सर अभी तो वो अभी सर नौबत बदली है। सरकार कब They कार्रवाई are करेगी? definitely now in a spot which they did not, which was not there earlier. पहले तो ये भी नहीं हुआ कि आपके चैनल वाले जाकर के इस प्रकार से इंटरव्यू ले पाते। सर, आपको डर नहीं कहीं कि ये जो आजादी का सेंटिमेंट है वो बढ़ रहा है? एक तरफ कश्मीर में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि बीजेपी जो है, बीजेपी की सरकार, अभी आपका एक प्रश्न छूट गया राजदीप, नहीं। महबूबा वाला, कि जी। महबूबा के साथ आपने गठबंधन जी, किया। जी। आप मुझे बताइए, जब 2 पार्टियां लार्जेस्ट नंबर लेकर आई, दो आई कुड हैव इजीली एस्केप्ड आउट ऑफ दिस लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, बट देन लेट मी पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। प्रजातांत्रिक प्रणाली की क्या मर्यादा थी कि 2 बड़ी पार्टियां ही आपस में गठबंधन बनाए?
ये स्वाभाविक गठबंधन है। नहीं, मैं तो एंड कहता हूं दिस हैज गठबंधन बीन डिक्टेटेड बाय, दिस इज अ मैंडेट डिक्टेटेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। सर, आई डिडंट आस्क फॉर इट। अगर हमें पूछा होता हम कहते 2/3 बहुमत भाजपा के ही दे दो। जितेंद्र सिंह जी, मैं कह रहा हूं कि गठबंधन शायद जायज था, उसके खिलाफ मैं नहीं कह रहा, मैं ये पूछ रहा हूं उसके बाद क्या हुआ। और अब मैं पूछ रहा हूं कि आज अगर आजादी की सेंटिमेंट बढ़ रही है कुछ इलाकों में, क्या ये कहीं ना कहीं इस वजह से है, प्रोपेगेंडा कहिए या जो भी, कि बीजेपी की एक छवि बन गई है कि वो एक एंटी मुस्लिम पार्टी है, और जम्मू एंड कश्मीर एकमेव, खासकर की कश्मीर वैली एकमेव जगह है जो मुस्लिम मेजॉरिटी जगह है। तो लोगों के मन में बैठ गया है कि हम बीजेपी के साथ कुछ समझौता कुछ नहीं कर सकते, और ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन है जिसकी वजह से हुर्रियत को छोड़िए सर, जनता से बात करिए, जनता के पास जाइए। नाउ कैन आई रिस्पॉन्ड टू दैट? हुर्रियत को वाकई छोड़िए, जनता से बात करिए, और जनता से बात करके पता चलेगा आपको कि ये दोनों ही प्रश्न के भाग बिल्कुल विपरीत हैं। A large majority of people in Kashmir Valley, particularly the common man walking in the streets of Srinagar, and more so the youth, wish to be a part of the development journey led by Modi. आज इतनी समझ उनको है, ये ग्लोबल वर्ल्ड है, वो देख रहे हैं बाकी प्रदेशों में किस प्रकार इन अद्भुत योजनाओं का लाभ मिल रहा है युवाओं को, वो अपने आप को वंचित नहीं रखना चाहते। दिस इज जस्ट सिंपली अ व्हील ऑफ फियर विच इज अदरवाइज आपने इसका सर्वे किया है? बिल्कुल आपको बताता हूँ। अरे मैं सर्वे के बिना बात ही नहीं करूंगा। देव जी प्लीज, अभी 3 दिन पहले फॉर 700 पोस्ट यू हैड 68,000 बॉयज एंड गर्ल्स कमिंग आउट डिफाइंग ऑल डिक्टेट्स। क्यों आप इस बात को नकारते हैं? दूसरी बात, कौन कहता है कि मुस्लिम भयभीत है? यदि होता तो उत्तर प्रदेश में उस प्रकार के नतीजे नहीं आते। आप क्या समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो नतीजे आए हैं, जम्मू कश्मीर का बाशिंदा उससे बेखबर है? बिल्कुल नहीं। रादर उन्हें ये लग रहा है देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी कि हमारा भविष्य यदि सुरक्षित है, और इसलिए बार बार युवाओं की बात कर रहा हूँ, बिकॉज दे आर द इंडिया ऑफ 2017 इज यंग इंडिया। बिकॉज लेकिन इसी युवा को डराया भी जा रहा है। एक इस्लामिक रेडिकलिज्म आ रही है। अब मैं आपको बताऊं, ये अलग पहलू है। अगर कोई गौरक्षक ग्रुप कुछ करे उत्तर प्रदेश में और कहीं, उसके वीडियोस चले जाते हैं कश्मीर सोशल मीडिया के जरिए, और वो इस्लामिक रेडिकलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक तरह से हिंदू रेडिकलिज्म, एक तरह हिंदू एक्सट्रीमिज्म, और दूसरी तरफ इस्लामिक रेडिकलिज्म, ये एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं। और आपकी पार्टी हिंदू एक्सट्रीमिज्म को अगर रोक नहीं पाएगी तो इस्लामिक रेडिकलिज्म बढ़ता जाएगा। अब हम इस पर भी बढ़ते हैं। पिछले सवाल का तो हो गया ना जी कि मुस्लिम नाखुश भी नहीं है, नहीं, ये आपका और नहीं, मैं तो आंकड़ों के साथ कह रहा हूँ, और वो मुख्य धारा का हिस्सा बनकर चलना चाहते हैं, बिकॉज दे आर दी स्टेक होल्डर्स, दे फाइंड देयर स्टेक इन द मोदी गवर्नमेंट एंड द मोदी लेड इंडिया। अब आ गई बात रेडिकलाइजेशन की। देखिए, विदाउट गेटिंग इनटू एनी कंसिडरेशन, जो थोड़ा बहुत ये रेडिकलाइजेशन का फिनोमेना आया, एंड यू वुड एग्री विद मी टू दैट एक्सटेंट, इट इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना ऑल्सो। And academically speaking, the areas which have a majority population of Muslim have to be more vulnerable. So definitely, that needs to be guarded. It is happening not only in Kashmir, also in other Muslim dominant areas of not only India but also of the world. Having said that, अब ये जो गौ रक्षा और दूसरी बात है, होता क्या है कि अब जैसे हमारे विपक्षी दलों ने भी ये शुरू किया है, अगर कहीं कोई चोरी भी हो जाए तो इसको नाम दिया जाता है कि ये मजहब का नाम है, कि साहब भाजपा आ गई तो इसलिए ये चोरी हो गई। अगर हिंदू के घर में चोरी हुई है तो यकीनन मुसलमान ने किया, मुसलमान के घर में चोरी हुई है हिंदू ने किया। और आई टेल यू दिस इज अ वेरी अनहेल्दी फिनोमेना विच हैज बीन परपेचुएटेड फॉर जनरेशंस टुगेदर बाय द कांग्रेस पार्टी, बिकॉज देयर पॉलिटिक्स थ्राइव्ड ऑन दिस। पहली बार, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की, कि धर्म, जात, मजहब, वर्ग से ऊपर उठ करके, और इन 5 चुनावों में भी जाहिर हुआ। लेकिन अगर कश्मीर में एक बार इल्जाम हम पर लगाया जाता था, यदि ये सत्य होता तो उस प्रकार के परिणाम ना आते जैसे आते। मैं आपको कश्मीर एक बार फिर लिए चल रहा हूं। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा भारत के साथ आप कह रहे हैं जुड़ना चाहता है वहां का, लेकिन जो युवा भारत के साथ जुड़ता है, देश के साथ जुड़ता है, उसको मार दिया जाता है। लेफ्टिनेंट उमर फयाज का हमने उदाहरण देखा। तो क्यों नहीं इस तरह की के युवाओं को सुरक्षा दे पा रही है सरकार? जो पुलिस में जा रहा है उसके घरों में बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है। दैट इज द पॉइंट एंड दैट इज द कंसर्न।
कि जब युवा जुड़ रहा है, जैसे अफयाज भी जुड़ना ही चाहता था ना, ही इज वन ऑफ दोस्त, जुड़ गया था जुड़ गया था, अफसर जुड़ गया था था, सेना और में। इस प्रकार से और भी जुड़ना चाहते हैं, और उनको कैसे महफूज और सुरक्षित रखा जाए, उसका यही तो तरीका है कि जो उनकी सुरक्षा को ललकारते हैं पहले उन्हें कंटेन किया जाए, और वही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वी हैव टू कंटेन दीज एलिमेंट्स विच टेंड टू थ्रेटन और इंटीमिडेट द यूथ हु वांट टू मूव फॉरवर्ड along with the youth of the rest of India. That is precisely what you are saying. हमने एक तहकीकात दिखाई डॉक्टर साहब, जिसमें ऑपरेशन स्टोन पेल्टर में हमने दिखाया किस तरीके से कुछ इंट्रेंच स्टोन पेल्टर्स कैमरे पे कैद हैं, कहते हुए कई सालों से वो स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनको हर महीने कितना पैसा मिलता है, उनकी पूरी जॉब बायोडेटा है, जितने हट्टे कट्टे हुए जितना दूर पत्थर फेंक सकते हो उतना ज़्यादा पैसा मिलता है। इस तरह के लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी ऑफ टेरर है जम्मू कश्मीर की, उसकी हड्डी क्यों नहीं तोड़ पा रही? बिल्कुल, मैं आपके इस बात से 100% सहमत हूँ। दिस इज मोर ऑफ अ मर्सिनरी टेररिज्म, इफ दैट इज द टर्म व्हिच इज नॉट बीन ऑफन यूज्ड, आई हैव नो हेजिटेशन टू यूज इट। दिस इज नॉट इवन अ फ्रीडम फाइट। और क्षमा कीजिएगा, चाहे वो हुर्रियत है, दूसरे लोग जो लगाववाद की बात करते हैं, जहाद की बात करते हैं, वो अपने लोगों के साथ भी बेवफाई कर रहे हैं। दे आर नॉट इवन फेथफुल टू द कॉज व्हिच दे टेंड टू परपेचुएट। दे आर नॉट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द इल्क ऑफ महात्मा गांधी और गुरु गोविंद सिंह। यदि ऐसे होते तो पहले अपने बच्चों को पत्थरबाज बनाते। उनके बच्चे तो दुनिया भर में पढ़ रहे हैं, दुनिया भर में पढ़ रहे हैं, और गरीब के बच्चे को पत्थरबाज बनाते। इफ द कॉज वाज सो होली, इफ द लिबर्टी वाज सो होली व्हिच दे आर ट्राइंग टू परपेचुएट, दे वुड हैव सेट एन एग्जांपल by at least sparing one child each from every family, which they haven't done. और ये उनके बात खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, अब हो रही है और होगी। तभी मैंने कहा, ये आप आश्वासन दे रहे हैं? बिल्कुल आश्वासन। हुर्रियत के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो सब लोग, और ये मैं ही नहीं कह रहा, अभी परसों रक्षा मंत्री जी ने श्रीनगर की धरती पर पत्रकार वार्ता में कहा है, कोई भी व्यक्ति जो आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा या वहां की अमन शांति में खलल डालने का प्रयास करेगा, उसके साथ कार्रवाई होगी। इसमें कोई तो समझौता मेरा नहीं सवाल होगा। सीधा ये है, क्या हुर्रियत को बैन करने का वक्त आ गया है डॉक्टर साहब? See, honestly speaking, Rahul, it'll be out of turn for me to answer that, and I should not be answering. क्यों? आप जम्मू कश्मीर से? No, I'm जम्मू कश्मीर का। इसका मतलब नहीं है कि मुझे सरकार ने अब अधिकार दे दिया कि जम्मू कश्मीर को लेकर के मैं जो कुछ भी हो यहाँ पे गोल टेबल पे बैठ के बोल दूँ। There are certain agencies in place, mechanism in place. We have a Ministry of Home Affairs, we have a Ministry of External Affairs. So they'll take a call appropriately. आपकी क्या राय? No, I think the law of land should take its course, whatever is appropriate. नहीं, क्योंकि जो लोग कैमरे पे कैद होते हैं वो ये कहते हुए कि पाकिस्तान से पैसा मिलता है, कश्मीर में स्कूलों को वो जलाते हैं, क्या ये आतंकवादी नहीं तो क्या है? क्या निश्चय should these people be called the Hurriyat perpetuator of terrorism is as much responsible as the enactor of terrorism. 35 स्कूल जला दिए, I'll go one 35 step स्कूल। further, in fact, to retreat what you're saying. सर ये बताइए कि क्या ये सही मेरा ये कहना कि 3 साल में हमने कश्मीर को टेरिटोरियली सुरक्षित किया, यानी जमीन हमारी है, हमने ये बात बार बार कही है, कश्मीर जमीन हमारी है, कश्मीर हमारी है, लेकिन कश्मीरी लोगों को इमोशनली और साइकोलॉजिकली हमारी तरफ किया है या नहीं? आर वी ट्रीटिंग दिस प्योरली एज अ प्रॉब्लम ऑफ लैंड? ये जमीन हमारी No, I think लेकिन जमीन पर जो लोग रहते हैं उनको, वाजपेयी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी सर, आप भी थे मुझे लगता है उस दिन, उन्होंने जब इंसानियत की बात कही थी, हर चीज जो है कश्मीर में इंसानियत के दायरे में होना पड़ेगा। मुझे ये बताइए, जब मोदी जी कश्मीर की बात करते हैं, मैं उनसे वो उस तरह के अल्फाज उनसे नहीं सुनाई देते जो मैं वाजपेयी जी से सुनता था। उनके लिए और आपके लिए मुझे लगता है ये जमीन की बात है, एक तरह से जमीन हमारी। ये your third question is virtually the same as the earlier 2 questions, कि लोग engage नहीं है, and I think the answer with evidence would suffice when I said कि 2 दिन पहले साहब श्रीनगर में 7%, और उसके बाद क्या हुआ? 700 पोस्टों के लिए 68,000 लड़के लड़कियां मारे। आप बार बार क्यों नहीं उस बात को दोहरा रहे? उमर अब्दुल्ला की सरकार में था तब भी ये हो रहा था। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं, वही तो हम भी कह रहे हैं, तब भी हो रहा था, इससे ज्यादा हो रहा था, और 25 वर्षों से होता रहा, 1979 से 90 से लेकर के। वोटिंग क्यों होती है? श्रीनगर में चुनाव होता है, 7% वोटिंग होती है। अरे अगर आप इस तरह से स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो हम आपको कहेंगे 2010 में इतने से क्यों मरे? आप भी मुझे एक स्टैटिस्टिक दे रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं लोगों के दिल जीतने के लिए आप क्या कर रहे हैं? लोगों के दिल पहले ही हमारे साथ है। क्षमा कीजिएगा, ये आपके जैसे बुद्धिजीवी दिल जुदा करने का काम कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू द यूथ ऑफ कश्मीर, एंड आई एम सेइंग दिस विद ऑल द कॉन्फिडेंस एट माय कमांड, द यूथ ऑफ कश्मीर विशेस टू बी अ पार्ट ऑफ
द मेन स्ट्रीम इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स डॉक्टर साहब, डेवलपमेंट। लेकिन और ये सत्य है। और ये पत्थरबाजी में आपने गौरव जो आप कह रहे थे फ्याज का उदाहरण, ये उसी का उदाहरण है, उसी की मिसाल है। देयर इज अ व्हील ऑफ फियर व्हिच वी हैव टू नाउ अनफोल्ड। अगर हम ये भय खौफ का माहौल खत्म कर दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भारी संख्या में लोग आकर के आपके साथ चलेंगे। अनंतनाग में मुख्यमंत्री की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, तो फिर कहां है security? इसलिए बिकॉज देर आर perpetrators of terrorism disturbance still around and we will make sure that this doesn't last for long. That's absolutely what I'm saying. डॉक्टर साहब, You cannot draw a comparison and you can, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि पैसे दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी आ रहा है, तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इनोसेंट आदमी भी दहशतगर्द है। एंड यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू द कॉज ऑफ कश्मीर बाय पेंटिंग एवरी कश्मीरी एज अ टेररिस्ट और अ परपेट्रेटर और अ सपोर्टर ऑफ टेररिज्म, व्हिच इज नॉट ट्रू। मैं नहीं कर रहा, आपकी सरकार नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि साहब आप दिल नहीं जीत रहे। मैं ये कह रहा हूं कि दिल हमारे साथ हैं, दिलों को जुदा करने का काम कर रहा है, और जो लोग काम कर रहे हैं उसका समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। डॉक्टर साहब, बीजेपी की जो मुख्य विचारधारा है उससे जुड़ा एक मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ट्रिपल तलाक की दिशा में बड़ी बहस शुरू हो गई है। उसी से जुड़ा एक और मुद्दा है आर्टिकल 370 का, जो कि आपका एक पेट पैशन कई सालों से रहा है। अगर हम अगले 2 साल की बात करें, क्या ये माना जा सकता है कि 2019 के आम चुनाव से पहले आर्टिकल 370 को एब्रिगेट करने की दिशा में आपकी पार्टी आगे बढ़ेगी? नहीं, देखिए, जैसा आपने कहा कि वहाँ एक गठबंधन की सरकार है और एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर काम कर रही है, विच इज़ नॉट simply because we have started looking at Jammu Kashmir through a different prism. Why don't you for a moment look at Jammu Kashmir with the same prism, उसी चश्मे के साथ जैसे आप बाकी किसी प्रदेश को देखते हैं। पंजाब में भी तो हमारी गठबंधन सरकार रही है, भाजपा और अकाली दल की, दूसरे कई प्रदेशों में भी तो रही है। गठबंधन की अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ तकाजे होते हैं, कुछ मर्यादाएँ होती हैं, और वो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वहाँ उसको एजेंडा ऑफ अलायंस का नाम दिया गया है। वी हैव एग्री टू डिसएग्री ऑन सर्टेन पॉइंट्स, सर्टनली आई हैव नो हेजिटेशन टू से दैट वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी, और उस विचारधारा से हम कभी मुड़े नहीं हैं। हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति जम्मू कश्मीर की धरती पर दी है, एंड सो ऑल्सो इज ट्रू विद पीडीपी। दे मे बी हैविंग देयर ओन विचारधारा और वट एवर, बट दैट इज अ मैंडेट विच वॉज डिक्टेटेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। करने का कुछ इरादा नहीं। इसलिए while agreeing to disagree, the consensus was to focus on development in the interest of common man. And that is how this agenda was framed. And therefore, we don't have the mandate then to go beyond that, because that is the constraint of coalition, या जिसे आप कहते हैं coalition धर्म। लेकिन क्या वो धर्म आपको कार्रवाई करने से रोक रहा है? न केवल वो 30 आतंकवादी जो खुले घूम रहे हैं, बल्कि अब आतंकवादी खुले तौर पर आर्मी के कैंपों पर अटैक कर रहे हैं, जो काफी अरसे से नहीं हो रहा था। उड़ी में आपने देखा, कुपवारा में आपने देखा, थोड़ा हटे तो पठानकोट में आपने देखा कि आतंकवादी घुस के मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी चिंता से इनकार नहीं करता, और निश्चय ही निर्णायक कार्रवाई उस दिशा में आरंभ हो चुकी है और उसके परिणाम भी आने। सर, ये निर्णायक कार्रवाई की आप बात करते हैं, हमने कहा कि हमने पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, उसके बाद हमारे जवानों के सर वो फिर काट के ले गए, नियंत्रण रेखा पे आर्टिलरी की फायरिंग वो कर रहे हैं, तो ये हम कहते हैं कि हमने सबक सिखा दिया, पाकिस्तान को मार दिया। आपने भी बोला कि बहुत फायरिंग कर रहे हैं, देखो मैं भी देख के आया हूँ, आर्मी ने बोला, आपने मुझे इंटरव्यू में बोला इतनी फायरिंग, आर्मी ने कहा कभी इतनी आज़ादी नहीं मिली। आप कहते हैं कि सबक सिखाया, लेकिन दूसरा वाला अगर माने ही ना कि उसने सबक सीखा, वो आपको फिर छेड़ता रहे, तो क्या सबक सिखाया आपने? एक बात तो आपके ध्यान में होगी, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उसकी चर्चा पहले हमने राउंड टेबल पर नहीं की थी, होने के बाद की थी। अब आगे क्या होगा उसकी चर्चा भी होने के बाद करेंगे कुछ मतलब निश्चय ही जिम्मेवार सरकार है, अपने दायित्व को निभाते हुए जो भी उचित होगा करेगी। आप जिस तरह से कह रहे हैं, कहीं आपके एक ओवर कॉन्फिडेंस नजर आता है, एक ऐसा नजर आता है कि आप स्थिति के यू हैव गॉट कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, पूरा कंट्रोल आपका है। वास्तविकता ये भी है कि दूसरी तरफ से जो शत्रु है वो और चाइना एक आर कमिंग क्लोजर टुगेदर, एक अलायंस बन रहा है जो और भी मजबूत होने जा रहा है। दूसरी तरफ वहां जो डोमेस्टिक सिचुएशन है, सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री में, वो एक ऐसी स्थिति में आई है कि कौन जाने मिलिट्री वहां कल क्या करे। 2 कंट्रीज न्यूक्लियर पावर्स है। कहीं आपके इस ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं कमजोरी नजर आती है मुझे कि अगर कोई वीकनेस है इस 3 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, वो है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, कि आप ओवर कॉन्फिडेंट रहे हैं
और जो ग्राउंड सिचुएशन है आपकी ओवर कॉन्फिडेंस को जस्टिफाई नहीं करता। अब shall I respond? Now this expression overconfidence come from you. नहीं, जब भी आप निर्णायक लड़ाई कहते हैं मैं डर जाता I हूं। never said डरना चाहिए। आपने 6 डरना बार ही कहा- चाहिए। आपने 6 निर्णायक बार कार्रवाई कहा है से निर्णायक बिल्कुल लड़ाई। बिल्कुल डिसाइसिव, उसका अंग्रेजी में तर्जुमा अथवा अनुवाद डिसाइसिव होता है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता राजदीप जी। नहीं, निर्णायक चलो लड़ाई- let me come to the point. जी, Decisive, I said. यस, No responsible government will be overconfident and we are discreet enough to understand that. Having said that, देखिए ये जो अंदर का डोमेस्टिक उनके हालात हैं ये तो अपनी जगह हैं, इससे किसी ने इनकार नहीं किया। जो चीन और पाकिस्तान का बीच में नेक्स्ट है उससे भी किसी ने इनकार नहीं किया। तो इसका फिर क्या मतलब हुआ कि हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए? यदि हम कहते हैं कि जो भी स्थिति उत्पन्न होगी उसका निर्णायक निर्णय लेकर कार्रवाई की जाएगी तो ये तो सराहनीय बात है। अगर मैं कहूँगा नहीं साहब राजदीप जी हम हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, आप कहें बहुत अच्छा सर, यू आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, दैट इज हाउ यू शुड बी। No, but the question is, when will this happen, sir? Like Rahul said, we've had one. I appreciate your concern and your impatience, like any other good patriotic Indian. But as I was responding to Rahul, कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो पहले तो जिक्र नहीं हुआ था ना, इसलिए कौन से समय क्या सिक्योरिटी एजेंसीज करेंगी, I don't have the mandate to share that. We'll do a few questions in English with your permission. हाँ, Dr. Jitendra Singh, as the senior most minister in the Modi government who comes from Jammu and Kashmir, when you look back at 3 years of the performance of NDA-2, would you accept that Kashmir has been one of the black spots in that report card? I would not. On the other hand, I would say that we carried a huge baggage of 67 years of what has been piling up. This is a cumulative effect which we had to now inherit. And as far as the militancy per se is concerned, it began in 1989-90, and therefore series of doings and misdoings have happened over the years. But I'm sure we would be able to redeem it. What's the strategy for redemption? As I said, I'm not here to share the strategy. No, but nor there am must I be a privy to- strategy. Yes, The there is people a- of Kashmir there is must a- know what there that is a- strategy is. No, people of Kashmir would know when it happens because these are security concerns of a great degree of sensitivity. Neither I am privy to all this, nor am I mandated to share this, nor I would be speaking in turn when I share this. But sure, and I think once the defense minister day before yesterday said that there will be no relaxation, no efforts spared, I don't think I need to add anything. You know, there are to what he certain said. areas in Kashmir, if I may, which are almost seen as liberated zones, where you have a large group of terrorists roaming around openly. When a terrorist like Afzal Guru was hanged, people said Kashmir will burn. There was a Congress government at the center and a national conference government in the state. But the state did not burn. On the other hand, when a terrorist like Burhan Wani was killed in a genuine encounter, what happened? We saw Kashmir burnt for several months, and even now the situation is not back to normal. Again, things will be back to normal and Kashmir will not burn. Be rest assured. but do you agree that when you see 2 summers of stone pelters, including now university students coming on the stone, School students, yes. the optics are not great for any government. If these pictures go viral, and we are in the age of social media, if they are shown in every foreign newspaper, does that trouble you as a proud resident of Jammu and Kashmir and India, see, that a Rajdeep, part of India we seem to be, when Chidambaram, for example, says India is losing Kashmir, what would you tell a Chidambaram? Now you have again put 2-3 questions. So now let me respond. At the outset, Rajdeep, why should we preempt so many things? The summer has just set in. The flowers of last spring do not appear this spring. जैसे वो कहावत है कि पिछली बहार फिर से आती है कि पिछली बहार का फूल नहीं नजर आता, वो मुरझा गया होता है. So why do you preempt what is going to happen this summer? A. B. Though I never indulge in making a personal comment, but you refer to Mr. Chidambaram, I think he had ample opportunity to address this question when he was Home Minister. Because he could not, now it is our baggage. Do you And believe we that will- we are losing Kashmir emotionally and psychologically? Certainly not. Kashmir today emotionally is much, much closer to us. Had it not been so, I'm glad Gaurav put forward the example of Yaz. It's one of that. But voices or people like Lieutenant Umar Fayaz, a brave young Kashmiri, and that too from South Yes. Kashmir, joined the army, the Rajputana Rifles.
loved the country, but he was killed. He was killed by people he grew up with, apparently. Yes, he was. Which means pro-India voices are systematically being silenced in there is a Kashmir. He's not the only example, sir. No, there's a systematic design. There's a systematic design to drown pro-India sentiment, to carry on with this mayhem and this disturbance, because there's a vested interest. Vested interest, of course, the hostile foreign power, which we've been naming again and again, Pakistan, which is funding all this, and at the same time, vested interest of some of the local activists who have over the years learned to play this politics by other means. But what are you doing to counter them? No, let me first complete the first part. And who are actually now getting absolutely disrobed, unmasked. Because, as I said, they are not, they have done the greatest harm to their own people through their duplicity. And now, yes. But how do you look at our policy towards Pakistan now? In year one, in fact on day one, Narendra Modi ji invited Nawaz Sharif, there was sari shawl diplomacy. Then year two, he went to Pakistan, impromptu visit, attended a wedding of Nawaz Sharif's family. Year three, surgical strike. Please explain to me what this means to me. I am an average tax-paying Indian who is worried for my children's future. I think what is the fourth step going to be war with Pakistan, or is the fourth step going to be some kind of new dramatic? No, measure? I think this is a very simplistic. So these are all three facts yes, I'm providing. I'm responding to it. I will love to respond whole day. We've had so much in common. See, when you go for hard options, you always exhaust the soft options. And I think all of us should appreciate, with all the sincerity at our command, that here we had a Prime Minister, and the first time a BJP majority government was being sworn in, and he took this decision of inviting all the heads of state from the neighboring countries. What great gesture could be there other than this? And if some of these neighboring countries fail to respond to this, the onus lies with them, not with Prime Minister Modi. And if this outreach has helped India gain in esteem and stature all over the world, but if a certain country, in this case Pakistan, chooses to live in a state of denial for whatever reasons of its own making, then again, onus is with that nation. Now, having gone through all this, how it is to be dealt with is a different option. But that does not mean, अगर आपके साथ मेरा झगड़ा है तो मैं आते ही आपको झापड़ मार दूंगा. पहले मैं को राजदीप जी नमस्ते, आज हम अमन के साथ बैठ के बात करें कि नहीं करें. कल बहुत झगड़ा हुआ था. अच्छा, अब आते ही मैं झापड़ लगा दूंगा. आपने कहना कि साहब ये कितना बेअदब आदमी है. So we have exhausted means of civility, and now we are going in for hard options. No, Jitendra Singh, I'll tell you why I'm worried. Why I'm worried? Because I'm again getting conflicting signals. At one stage, you're saying Nirnayak Ladai, decisive action is going to be taken. We have, the attempt is being made to neutralize, if I may be allowed to use the word, terrorists. On the other hand, I hear that Sajjan Jindal is in Islamabad having breakfast with Nawaz Sharif, and I'm told this is part of some back channel diplomacy that is going on. So I want to know what is going on. Is there an attempt being made to reach out to Nawaz Sharif, or is there an attempt to take on the government? I wish my resource pool of information was as rich as yours. I'm not aware of all this. There is no back channel diplomacy? I'm not aware of this, if at all. I mean, I'm learning this from you. Have you had an opportunity, Dr. Jitendra Singh, to look at the Hurriyat truth tapes that we put out in India Today and on Aaj Tak? How does our investigation impact and influence how the government looks at the Hurriyat Council? No, certainly. I think this is an added authentication of the evidence which has already been made available from time to time. And more than that, something like this coming from a channel as widely seen as yours also creates a public opinion for a decisive action, as I may. No, but has that decisive action started? Certainly, it is already set in. What does that decisive action mean? I think the Raksha Mantri made a very elaborate statement on this yesterday itself in Srinagar, and I don't need to add to that. No, but will your coalition partner, the PDP, permit the government to take decisive action against the Hurriyat? Because PDP is more for engagement with the Hurriyat. PDP is already on board, and whatever is happening with the knowledge of the coalition partner. But why is it that you talk of decisive action and at the same time, characters like Sayyid Ali Shah Gilani live in what is called 5-star house arrest? They should be in central prisons.
for the kind of crimes their associates say they are guilty of, by their own admission, these terrorists should be in jail on charges like sedition and treason. We've been treating them with kid gloves, sir. No, certainly, you have a point, and I would not deny that. But as I said, let the law of land take its course, and now that we have been assured by the concerned agencies and concerned ministries that they would look into it and would not spare anybody, let's see how it moves on. Why were you soft for 3 years? For 3 years they've been having doodh pani malai in... No, I would House not Arrest. say soft. We would say that, then the question would be, why were they soft for the last 25 years? We just came in, we were trying to gather enough of evidence and substance to proceed ahead, and now we... So now you have the evidence, you think? Certainly, I think I don't need to add to what's been already said by the defense minister yesterday. Let me And this is precisely when one of you questioned him in Srinagar, and he said that your evidence is yet another addition to it, and rightly so. But this, as I said, is a cumulative effect of what has happened in the last 25, 27 years when we were not around. let's end this by asking you, if in 2014 the slogan was Achhe Din, what will you tell the people of Jammu and Kashmir in 2019 when you go back to elections? Surely you cannot give the slogan of Achhe Din again. So कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू के लोगों के लिए क्या स्लोगन होगा? मुझे लगता है कि हमें स्लोगन नहीं देना पड़ेगा, लोग खुद कहेंगे कि अच्छे दिन आ गए. अच्छा, लोग खुद कहेंगे. जी. Let's look, Dr. Saab, at the problem with Pakistan. You know, one of the things the government says, and when you'd gone to the LOC, you told me that the officers and soldiers are telling you that they've never been given such a free hand, that we are teaching Pakistan a lesson. Now, people will believe that Pakistan has been taught a lesson when they behave differently. If you claim that they've been taught a lesson, but they continue to behead our soldiers, they continue to fire at us, they continue to fire at our civilians, then how have they been taught? No, I a lesson? agree with you. It has to be strategized accordingly. You have a neighbor who is in a denial mode, who has its own compulsions, both domestic as well as international, to continue to behave or conduct in the manner it is behaving. And therefore, the strategy accordingly has to be optimized, which I am sure the Ministry of Defence, Ministry of External Affairs and the other concerned agencies would do, because they are in cognizance of the entire sequence of events. Also, And the certainly Ministry of Home... your concern is well placed, and I'm sure this also is the concern of the Because agencies two dealing with Indian it. soldiers had their heads beheaded. We I haven't agree done with you. anything about that. No, I won't say nothing has been done, but yes, No. whatever is Retaliation must be proportionate to the offense. yes, And retaliation must be visible on ground for people to build their confidence that yes, action is being taken. Yes, I agree with you. The retaliation has to ultimately end up building the confidence. But as I said, this would happen sooner than later. Sir, tell me, is it true that the Home Ministry is now run essentially by the Prime Minister's office? There's a belief that when it comes to all these security decisions, particularly on Jammu and Kashmir and on PMO is taking the calls. The Home Ministry is there in name. It lacks the power that it once used to have. This is far from Sardar Patel. And that's not necessarily true only of your government. It's been happening for a number of, we've had a series of Home Ministers who have been very weak, barring one or two. Is that true of this government as well? That essentially all crucial decisions on internal security are taken in the PMO? No, I am honestly speaking hearing this from you, so I won't be able to respond. For youth of Kashmir who may be pelting stones, how do you get them away from pelting stones? Are we creating more jobs for them, more universities for them, more avenues for them, more engagement in the rest of the country? Is any of that happening? That's a very important question. See, as Rahul was rightly pointing out, that over the years this has become a mercenary thing also, and there are also paid stone pelters, which also authenticates another contention that we've been trying to make from time to time, that this is not an indigenous movement altogether, as it's been trying to put out. And even their leaders are not sincere to the cause of so-called jihad or so-called freedom. They have in fact become mercenary freedom fighters. And therefore, this has to happen at 2-3 levels. And yes, all of us have to work for it. Not only at the level of government, even at the level of society. The youth now gradually are becoming much and much more awakened. That's why you have so many youth not only applying for the army, even for the civil services. This year, the second topper was a boy from Anantnag, the most militancy affected district. In fact, last few years you've had a number of toppers. Yes, Do you believe... so there's a definite change of mindset in the youth of Kashmir, because they have begun to realize this duplicity, and I must thank the
active channels like you, because we have a real-time reporting. Earlier on, I do bear me out because the old-timers are familiar with that famous observation about Kashmir leaders was that they deliver one statement in Srinagar, they deliver the second one in Jammu, and third one in Delhi. By the time a newspaper reports is 2 days late, and they get away with it. But this can't happen now. So that has now, made all the difference at the second level. And third, of course, as the perpetrators of violence and this terror activity are dealt with harshly, this would also put an end. So certainly this has to be done at multiple levels, and I would go beyond this, saying that this is not to be left to the government alone, at all levels. And sure, the society is also wakening up. No, do you believe finally, Dr. Singh, that the murder of Lieutenant Umar Fayaz will be an inflection point when the people of Jammu and Kashmir will realize that those who are trying to join the mainstream are being targeted by the terrorists? Are you hoping this will be a turning point in the violence? I think it's already made a difference. It's served as a cue for thought. People have started asking themselves. Youth are questioning each other. They are engaging themselves in a very deep introspection. And that's a healthy phenomenon which has now come up. You have a huge number of youth coming out of Kashmir Valley just to seek coaching for these military exams, for civil services exam, because they wish to be a part of this. But they are being denied that facility or privilege over there. So that itself is a great and yet urge. there is another harsh reality. Sorry for, as always, trying to show the darker side, which is many of those youth, when they come to a Delhi, will not get rented accommodation in many plush colonies of this city because they are Kashmiris. Or if they go to a Mumbai, or they go, this is true, there is factual evidence to that effect. It is not easy for a young Kashmiri who goes out of Kashmir to get rented accommodation in our cities. And that is where I come to the trust deficit, which you also need to address. I think you yourself answered that. No government, no responsible government, or no right-thinking citizen will condone this kind of a behavior. And this has been also reiterated by even the Home Minister of India, that any student, leave aside from Jammu and Kashmir, or any state, going to other state, has to be treated the manner he deserves to be treated, not this way. See what's happening in universities, yes, in Meerut and other therefore, places, Kashmiri students no, then I will also, then I will also have to go. If India defeats Pakistan, God forbid, but then, in 10 days some student will get let's focus on the first point. Otherwise, then because of the brevity of time, then I'll also have to go to also discuss what is happening in JNU and what is happening in Hyderabad. So let's not go that far. There are the reverse situations elsewhere also. But confining to this, certainly no right-thinking citizen, no responsible citizen, and leave aside government, would ever condone this. And this again is a kind of a perception which has to be dealt with jointly, as much as by political activists as by the media friends. Okay. One so last question, if I may have 10 owe a seconds. joint responsibility to address this. How do you counter de-radicalize youth? You know, if you have a Burhan Wani, a terrorist who says Islam ke naam par jihad, or if you have a Zakir Musa who says this is not for Azadi, it's for a caliphate. How do you de-radicalize that thinking that is gaining ground, if it is gaining ground? No, certainly this is a very very critical question, and I was in fact in response to one of the questions put by Rajiv, I was saying that this is now we are also witnessing a worldwide phenomenon of this radicalization of Wahhabism, or whatever way you put it. And personally, I feel that the areas which are predominantly inhabited by the Muslim population become more vulnerable. And therefore, we have to exercise safeguards, not at the level of government alone, but at different levels, the level of the civil society, at the level of the media. And certainly this is to be taken care of. The wrong kind of messaging or wrong kind of education or miseducation being imparted through wrong kind of outlets certainly needs to be checked, but not only at the level of government, but also at the level of society. But just to add to what Rahul was saying, the turn of events could be an eye-opener, even at the level of the society, to come and help in checking such kind of a phenomenon occurring in a Muslim area. Dr. Jitendra Singh, it's been fascinating chatting with you. The thing about Kashmir is that we can stay here all day and the questions will continue. But hopefully you're saying that, Umar Fayaz will be an inflection point. You're also saying that the action against the Hurriyat and the terrorists will be decisive, and Mehbooba Mufti is fully on board. And your government will not spare the crooks. They will not be having doodh badam pani, but they will be in the jails that they need to be. Let's see whether you're able to act
on what you're saying. Thank you so much Thank you. for joining us. Thank you. you.